Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करूची जदि भल लागिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ए विषय पढ़ा देख मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कहले आम जनरली बुझी था क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को ओके सो क्लासिकल मेकानिक्स रे जदि आम देखा हियर द स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग अ सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड आल्सो जनरलाइज्ड मोमेंटा किंतु क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जदि देखा इट इज स्पेसिफाइड बाय द क्वांटम स्टेट दैट इज सपोज phi n q is representing the position in which it is okay so quantum statistical mechanics here the classical assumption which are there that equal regions in the phase space are a priori equally probable and it is replaced by the assumption that each quantum state is a priori equally probable ओके सो एबे जदि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हमें डेराइव करबा को चाहिबा इंस्टेड ऑफ टेकिंग अबाउट द सेल्स वी टॉक अबाउट नाउ द क्वांटम स्टेट्स ओके सो फॉर दिस पर्पस लेट अस कंसीडर अ सिस्टम हैविंग एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल काहे की बिकॉज क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स रहउची खाली डिफरेंस हला सेल जगह रे हमें क्वांटम स्टेट नेबा ओके now let these particles be divided into quantum groups such that n1 n2 ni okay particles lie in groups having approximate energies like e1 e2 ei respectively. Let us say gi denote the statistical weight of the ith quantum group okay now Maxwell-Boltzmann statistics रे condition hela number 1 the particles are distinguishable and there is no symmetry restriction. Number 2 each eigenstate of ith quantum group may contain 0 1 2 up to ni particles okay ith quantum group जदि देखिबा जे कोनोसी आई तमरो eigenstate रो ताले 0 रु ni particles ये रखि परिबो ओके किछि रेस्ट्रिक्शन नाही थर्ड पॉइंट रे कहूची the total number of particles in the entire system is always a constant so total हे गला n equal to n1 plus n2 plus ni which can be written simply as summation over I of ni it is a constant quantity तापरे fourth point को आसो ये कहूची the sum of the energies of all the particles in the different quantum groups taken together constitutes the total energy of the system okay सबु particle energy को हमें जदि जोग कर देबा total energy system रो पाई जिबा okay now the distribution of ni particles in gi eigenstates can be done as follows केमति करिबा ना for each group or level there are gi elementary wave functions which are available and since there are no symmetry restriction any number of particles in a particular group may be associated with a wave function of the group okay so suppose hame ith group को consider kala then the particles are accommodated in gi different subgroups due to now the distinguishability of the particles each particle in this ith group can lie itself with any of gi subgroup okay जेहेतु distinguishability रहुची and independently of the fate of other particles okay therefore each particle of the ni particle has gi different possible
choices gi भितर जे कोनसी जगह रे रही परिबो each particle. So consequently the total number of choices for ni particles in gi subgroups is like gi to the power ni. Okay, eta asigala यार chances or you can say simply the probability एतिकी यार choices achi. Okay, now keeping in mind the distinguishability of the particles, so the division of total number, that is n particles, into the groups n1 n2 ni can be made in n factorial ways. Okay, आमे n संख्यक पार्टिकल को ग्रुप वाइज n1 n2 ni करिकी केते वे रे आमे डिस्ट्रीब्यूट करि परिबा ना n factorial way रे by permuting the particles among themselves. एटा permutation रो आसिला. Thus the total number of eigenstates for the whole system केते हेबो ना n factorial. ओके, एटा आछि तमरो जो ग्रुप रे जो हिसाब रे आमे सजाउछु डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को तापरे प्रत्येक जो स्टेट रोची बा सब ग्रुप रोची ता पई गोटे गोटे आसीगला g1 टू द पावर n1 g2 टू द पावर n1 डॉट डॉट gi टू द पावर n1 डॉट 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 चलला एंती ना. however because the particles within a group or a level are indistinguishable. को जगह रे indistinguishable in quantum mechanics. Okay, in case of your macroscopic state of view. Okay, so their permutation among themselves do not produce any new eigenstate. Okay, eta puni agote kotha कहला. Therefore the total number of different eigenstates of the whole system, ebe ame indistinguishability को जदि consideration को नेबा ताहले एबे total number of different eigenstates को आमे जदि represent करछु कैपिटल G ताहले ऊपर जो क्वांटिटी टा आमे पाइतिला ताकू न्यूमरेटर रखिबा एई क्वांटिटी याकू एबे डिवाइड करिबा n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल डॉट डॉट ni फैक्टोरियल. राइट. अच्छा, एबे प्रत्येक 1 पाई 1 2 पाई 2 i पाई i ए हिसाब रे देखो हमें रेशियो करी किना लिखि देला. ओके, बाहर हमरो रही जाउची n फैक्टोरियल. So we can write simply n factorial, then this is the multiplication over I of gi ni divided by ni factorial. Right. So the probability of the given state is now ohm equal to this value g into a constant. Okay, now let us take logarithm of the above equation, so that log of ohm equal to log n factorial. तापरे एटी मल्टीप्लिकेशन टा एबे समेशन ही जिवो लॉग टा भीतर को पसिला. देखो एटी रेशियो अछि, सो दुईटा भाग रे एटी आसी जिवो log of a by b रो वैल्यू आस्था है तमरो डिवाइड है कि हला से हिसाब रे आसी गला ni log gi. ओके, माने एटी एक्चुअली यार वैल्यू टा केते आस्थिबा कथा ए जो याकू ये आमे जदि एठी log अप्लाई करूछु log of a by b, then it will be log gi to the power ni minus log of ni ही थांता. ए जो gi to the power ni अछि एटा आगो को पळे आछि ए जगह रे. राइट. प्लस योर कांस्टेंट बिकॉज़ एटी मल्टीप्लिकेशन हितला एबे एटी प्लस हबो. राइट. सो एटा आसिला logarithm जेतेबेले हमें ऊपर इक्वेशन टू निगला. Now let us apply the Stirling approximation on the above equation, so that log ohm equal to एठी हमें देखो एबे Stirling approximation लगे देला आउ summation over I of ni को निगला n. Okay, so एटा आसीगला simplify करला पर एतिकी plus a constant, and remembering that n and gi are not subject to variation. Okay, n और gi change हेउ नाही, एटा constant বা fixed रहउची. Okay, ni varies continuously. और you can say आमे n और gi को constant नेबा ni को variable नेबा. ओके, एबे हमें रेडी हे गला ए जो ऊपर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करबा पई. ओके, डिफरेंशिएट कर देला. ओके, एठी डेल्टा लिखिची तमे सिंपली d भी लिखि पारो, किछ असुविधा नहीं. सो देखो सेपरेटली वेरियस टर्म रे हमें डिफरेंशिएट कर देला. जोटा कांस्टेंट अछि सेटा 0 हे जिवो. ओके, वेरिएबल जोटा थिला ni सेठी केवल देखो डेल्टा ni और डेल्टा ni वाला टर्म ही रहिची. ओके, बाकी सब 0 हे गला. तापरे डेल्टा ni को हमें कॉमन नहीं गला, तीनटा टर्म एठी भितरे स्क्वायर ब्रैकेट रहिबो. ओके, बेटर वी कैन राइट दिस एज यू कैन सी log of gi minus log of ni अछि, सो इटू log of ni
बाय GI ओके यही हिसाब से लिखिदेला +1 करदेला केमती है ये सिंपली देख माइनस टे आम समेसन आगू कमन नहीं आसचु ओके सो दैट उल्टी गला नाउ फॉर द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन we have ohm equal to ohm max यार वैल्यूटा मैक्सिमम हम सो यार डिफरेंशियल होते इक्वल टू 0 सो एबे ए जो वैल्यूटा आम पाइचु RHS रे निहाती भाव रे ए कंडीशन रू मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन बा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पई we can equate the RHS to be equal to 0. Now if we apply the condition that total number of particles is a constant, so n equal to summation over I, ni is a constant, so summation over I delta ni equal to 0. So निहाती भाव रे এই উপর ইকুয়েশন 6 রু আমি পাইবা কেতে না summation over I log ni gi equal to 0 right ये एतिकी ये यार वैल्यूटा देबो now we introduce auxiliary condition of conservation of total energy of the system according to which the total energy E equal to summation I ei ni which is a constant or delta E equal to summation I ei delta ni is equal to 0 okay so now applying the method of Lagrangian undermine multipliers that is by multiplying this equation 7 by alpha and equation 9 by beta तापरे alpha और beta 7 और 9 रे multiply करला परे we need to add the resulting expression into the equation 8 okay so हमरो finally एतिकी आसीगला summation I log ni by gi plus alpha plus beta ei delta ni बाहर रहउची okay which is equal to 0 now आमे देखिला as the variation of delta ni these are independent of each other so निहाती भाव रे एई जो कर्ली ब्रैकेट भीतर टर्मटा रहउची एटा ही 0 हेबो ओके सो याको एबे जदि आमे टिके सॉल्व करी करी जिबा we will get the value of ni to be equal to gi divided by e to the power alpha plus beta ei okay this result is called the Maxwell-Boltzmann distribution law okay आमे एबे distribution law रे पहुंची गला then next task is to find the value of alpha and beta देखो here the quantities alpha and beta occur in the final expression of all the three statistics say Maxwell-Boltzmann हो बा Bose-Einstein हो बा Fermi-Dirac हो so in all the three cases beta रो value होची 1 by kt where k is the Boltzmann's constant t is the absolute temperature right and in all these three statistics the expression for log ohm may be written as log ohm equal to summation I f of ni okay f is a function so what is this function for the three statistics fni is equal to ni log gi minus ni log ni plus constant Maxwell-Boltzmann then it is equal to gi plus ni log ni plus gi minus ni log ni minus gi log gi plus constant Bose-Einstein pi finally ni minus gi log gi minus ni log gi log ni plus gi log gi plus constant Fermi-Dirac pi okay so the condition for the maximum probability will give you the differential that is delta log ohm to be equal to 0 or summation delta f by ni delta ni equal to 0 so the auxiliary condition of conservation of total number of particles and the energy of the system will give you delta n equal to 0 and delta e equal to 0 right so एबे combine करिबा equation 2 3 और 4 को by the method of Lagrangian under undetermined multipliers then we can write delta log ohm equal to alpha delta ni plus beta we have summation ei delta ni equal to 0 and this equation holds good under equilibrium condition when both the terms alpha summation delta ni and beta summation ei delta ni are 0 as e and n are constants okay so it may be extended to the quasi-static process where external conditions change so slowly quasi-static যেতବେଳେ কই দেউছি external condition টা বহুত slowly change ହେଇଥାଏ okay and may be considered to be in equilibrium at any instant so
if the total number of particles in the system is kept to be constant, then the two auxiliary condition here will give you प्रथमटा है डेल्टा एन आई इक्वल टू 0 और डेल्टा ई आसीगला देख ये summation ni delta ei au summation ei delta ni. Okay, and the physical interpretation of the two terms in delta e is as follows. দুইটা term আসছে কি দেখো এটি তোমার delta e রে. Okay, first term is representing the work done in the expansion process. So summation I ni delta I equal to याकू जदि आमे partial derivative करिकी लिखिबा in terms of volume ताले it will be minus p delta v or p equal to this much, right? এটা work done को represent করছি during expansion. तापरे एटी p हेगला as we know it is the pressure and the sum of the forces, that is minus delta ei by del v of the particles in different states. Okay, and now the second term summation ei delta ni represents the change in the internal energy corresponding to the arrangement of the particles with respect to different states. Okay, and this change in internal energy is produced by the quantum transitions due to the heat energy, that is delta q supplied to the system. So delta q equal to the second term. Okay, ताले এই ইকুয়েশন এবে हमको ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স বঢ়িয়া দেই দেলা তার ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা, রাইট? according to which first law of thermodynamics কোন কয় dq equal to du plus pdv, right? now keeping the condition উপরে जो equation আমি দেখিଥିଲା 6 and 7 in mind, the equation 5 को एबे आमे लिखि परिबा delta log ohm equal to beta summation I ei delta ni or delta log ohm equal to beta delta q. केमती आसिला एटा ए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आमे पाइतला ए इक्वेशन टू. ओके, सो दिस shows that beta delta q is a perfect differential and beta is the integrating factor of the heat which is supplied to the system. Thus the statistical theory automatically will lead to an analog of the second law of thermodynamics, according to which the change in entropy, that is delta S, equal to delta q by t. Okay, এটা হচ্ছে গোটে perfect differential. Therefore 1 by t is the integrating factor of delta q. Okay, now from thermodynamics we know that all integrating factors for delta q differ only by a constant of the probability. Therefore we can write beta to be inversely proportional to the temperature, or beta is equal to 1 by kt. k is any constant, actually এটা আসিব Boltzmann constant. So এবে compare করিবা যদি তাহলে delta S, the change in entropy, is delta q by t or delta of log ohm by beta t. Okay, so by using equation 14 we get k ohm log ohm or simply S एबे integrate कर देले S आसीगला k log ohm, which is the well known Boltzmann's relation. Okay, so therefore the constant k in this equation 14 is identified, as I said, as the Boltzmann constant, and the factor alpha is determined by the condition summation ni equal to n in different cases of interest. Okay, so finally let us see the results and compare between the three statistics. Okay, so expression যদি দেখিবা আমি for the most probable distribution in the three statistics, প্রথমে আসছি Maxwell-Boltzmann statistics, according to which ni is equal to gi by e to the power alpha plus beta ei or gi by ni equal to e to the power alpha plus beta ei. Okay, তারপরে আসছি তোমার Bose-Einstein statistics, according to which ni is equal to gi by e to the power alpha plus beta I, extra factor আসিলা কোন -1. Okay, so accordingly gi by ni plus 1 equal to same e to the power alpha plus beta ei. And finally the third one, Fermi-Dirac statistics, according to which ni equal to gi by e to the power alpha plus beta I, extra factor hela plus 1, so that एबे gi by ni minus 1 is equal to e to the power alpha plus beta ei. So remember এই जो ratio gi by ni, okay, এটি -1 আসছে Fermi-Dirac रे, +1 ଆସିगला या सहित Bose-Einstein रे आ Maxwell-Boltzmann रे तो किछि भी नथिला. So जदि এই ratio gi by ni, its यार value, it is very large as compared to unity, that is 1,
then we can write Gi by Ni is nearly equal to Gi by Ni plus 1 or Gi by Ni minus 1. That means जदि Gi by Ni ratio रो value टा बहुत बेसी ही जाउची, then ए तीनटा जाको statistics merge करी जाउची, right? So for large value of Gi by Ni, Bose-Einstein and the Fermi-Dirac statistics approach to the Maxwell-Boltzmann distribution, and this is the case for the normal existence of the gases when the temperature is not too low, okay, and the pressure is not too high. Hence the classical statistics is capable of describing their behavior quite adequately. Okay, जो जगह रे temperature बहुत कम नथिबो, pressure बहुत बेसी नथिबो, only under certain extreme condition जो जगह रे classical statistics fail हुई थाए, okay, low temperature रे. Okay, so the example of these cases are radiation, okay, then liquid helium ପାଇଁ बहुत ही low temperature दरकार, and electron gas inside the metals. In all such cases, it is essential to use the respective distribution law. से हमें classical statistics apply करिबा ना quantum statistics apply करिबा, okay, depending upon the condition, right? So this is all about the Maxwell-Boltzmann statistics and its distribution function. Thank you.